So, good morning students. Today we are going to start our next topic, that is compounds of sulfur. So, among the compounds of sulfur, first of all we will discuss the sulfur dioxide. We will discuss the preparation of sulfur dioxide, how we can prepare sulfur dioxide, thereafter the physical and chemical properties of sulfur dioxide. So, when sulfur solid is treated with oxygen gas, it will form a sulfur molecule of sulfur dioxide. This sulfur dioxide will exist in gaseous state. Another reaction which can be used for the preparation of sulfur dioxide, that is treatment of sodium sulfite with H2SO4, it will form sulfur dioxide, sodium sulfate and water molecules. And as far as the laboratory preparation of sulfur dioxide is concerned, in laboratory sulfur dioxide can be prepared by the reaction of copper with H2SO4. It will form copper sulfate along with the formation of SO2 and H2O. This is the laboratory method for the preparation of sulfur dioxide. Here we have to balance the equation. We have to use two molecules of H2SO4 and there will be liberation of how many water molecules? There will be liberation of 2 water molecules. So all these are the methods of preparation of sulfur dioxide. And as far as the industrial preparation is concerned, industrially sulfur dioxide can be prepared either by the treatment of zinc sulfide with oxygen. The process is known as roasting of the ore. Zinc sulfide is treated with excess of oxygen to form zinc oxide along with the formation of sulfur dioxide. Similarly, you can balance this equation also. So 2 ZnS give rise to 2 zinc oxide along with formation of 2 molecules of sulfur dioxide, and you can balance the oxygen. 2 to the 4 into 6. Here we will add 3 molecules of O2. Then similarly, if you have FeS2, it is treated with oxygen, it will form. See, if FeS2 is treated with oxygen, it will form 4 molecules of Fe2O3 along with the formation of 8 molecules of sulfur dioxide. So this will be the balanced equation in this case. So all these are the methods of preparation of sulfur dioxide. In this way we can prepare sulfur dioxide. Now here we will discuss the properties of physical properties and chemical properties of sulfur dioxide. So as far as the physical properties are concerned, so first physical properties, it is a colorless, tasteless and toxic gas with pungent smell. Then it is heavier than air, and if we talk about its solubility, then it is readily soluble in water. ठीक है, water में क्या है, ये readily soluble है. Then अगर boiling point की बात करें तो boiling point क्या है इसका, 263 Kelvin है. And अगर chemical properties की बात करें, then this is an oxide of what? Non-metal. We have studied the nature of sulfur. Sulfur is a non-metal. Then another thing which we have studied कि non-metal के oxides कैसे होते हैं? They are acidic in nature. So acidic nature को explain करने के लिए what we have done? We have treated with water. Sulfur dioxide को किसके साथ treat किया? Water के साथ treat किया, and it leads to formation of an acid which is what? Sulfurous acid. क्या form हो रहा है यहाँ पे? Sulfurous acid form हो रहा है. And this sulfurous acid, upon its ionization, it will furnish H positive ion and HSO4 negative ion. This H positive ion indicates its acidic character. ये जो H positive ion यहाँ पे form हो रहा है, ये H positive ion क्या depict कर रहा है, क्या show कर रहा है? Acidic nature. ठीक है, जो H2SO3 form हुआ कैसे? With the hydrolysis of this sulfur dioxide. So this proves its acidic character. So this sulfur dioxide is acidic in nature. Next we can do various reaction. If we talk about the combustibility,
कंबशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर इसका कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म व्हाट, इट कैन फॉर्म sulfur trioxide. The reaction will take place in the presence of a V2O5 catalyst. As the reaction is reversible in nature, you can observe the reaction is reversible in nature means the rate of reaction will be what, slower. ये reaction क्या होगा, slow होगा. So this is the reaction when sulfur dioxide is treated with oxygen. And another reaction for the combustibility we can use carbon. So sulfur dioxide when it is treated with carbon it will form CO2 along with formation of sulfur, ठीक है, CO2 and along with formation of sulfur. Similarly this sulfur dioxide can be treated with other metal oxides such as magnesium or not oxide with other metals such as magnesium. अगर magnesium के साथ हम इसको treat कर रहे हैं, magnesium will combine with oxygen and it will form what, magnesium oxide, ठीक है, magnesium oxide form हो रहा है along with formation of a sulfur. Two molecules can react and it will form two atoms of magnesium can react and it will form magnesium oxide along with liberation of a sulfur. So students next अगर reactions की बात करें then reaction with chlorine. अगर हम क्लोरीन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, देन इट विल फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2 फॉर्म हो रहा है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है. देन रिएक्शन विद H2S, अगर H2S के साथ इसको ट्रीट करें, सल्फर डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद 2 moles of H2S, then it will form water and sulfur will be liberated. Then bleaching agent, sulfur dioxide is treated with water, it will form H2SO4 and along with formation of this nascent hydrogen. Though nascent hydrogen के atoms जो वो produce, hydrogen has a remarkable property when it is treated with colored matter. If we have colored matter, ये nascent hydrogen colored matter को किसमें change कर देगी, colorless मैटर में चेंज कर देगी, ठीक है. सो हियर इट कैन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट. So students, next we are going to study oxoacids of sulfur. So among the oxoacids of sulfur, first of all we have H2SO4. क्या है हमारे पास सबसे पहले, सल्फ्यूरिक एसिड. सो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर कर सकते हैं. First of all, here sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide in the presence of oxygen. Oxygen के साथ इसको treat किया, oxidize किया इसको और किसमें convert किया, sulfur trioxide में convert किया. You can balance the equation. 2SO2 plus O2 give rise to 2SO3. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जो sulfur trioxide है that will be converted into oleum, that is oleum. So sulfur trioxide is treated with small amount of H2SO4. सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट किया, विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ H2SO4 और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, अनदर ऑक्सो ऑफ सल्फर दैट इज ओलियम, ठीक है. देन दिस ओलियम विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इस ओलियम की क्या होगी, आगे हाइड्रोलिसिस होगी और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मेन इसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर वाटर. एंड अगर हम बात करें कि व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, देन वी कैन सी here I have drawn the structure of sulfuric acid, and this sulfuric acid is capable of forming hydrogen bonding. We have studied what is hydrogen bond, the bond formed between hydrogen and an electronegative element. So here oxygen is an electronegative element and hydrogen is also there. So a temporary bond will be formed between oxygen and hydrogen. This force of attraction is known as what? Hydrogen bond. And as extensive hydrogen bonding is there, so if we talk about the melting and boiling point, if we talk about the boiling point, then this molecule will have higher boiling point due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, क्यों इसका high boiling point होगा? Due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. And why it will be miscible? It will be soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. ये water के साथ भी क्या form कर सकता है? Hydrogen bonding form कर सकता है. That is why it will have greater affinity towards the water. Students, अगर बात करें chemical properties की,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की these are, first is dissociation. How this H2SO4 will dissociate? So here you can observe this H2SO4 upon its or in its aqueous solution, it will ionize to form H positive plus HSO4 negative species. And here dissociation constant is Ka1 and Ka1 is greater than 10. While this HSO4 negative species can further dissociate to form H positive plus SO4 2 negative species. Dissociation constant Ka2, this is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 2. And here you can observe it is forming bisulfate ion HSO4 negative species as well as it is forming sulfate ion. sulfate ion भी form हो रहा है, ठीक है. अगर overall reaction देखें तो H2SO4 जो है it will furnish how many H positive ions? It will furnish 2 H positive ion plus SO4 2 negative ion. Since it is furnishing 2 H positive ion, hence it will be a dibasic acid. किस तरह का acid होगा ये? It will be dibasic. Basicity क्या हो जाएगी इसके केस में? Will be 2. But as far as dissociation is concerned, first dissociation will take place easily and Ka1, the value of Ka1 is much greater as compared to the value of Ka2. So जो Ka1 की value है वो larger है. Greater the value of dissociation constant, greater will be acidic strength. You can say if Ka1 is larger means this dissociation will take place easily, while HSO4 negative to form H positive plus SO4 2 negative, this dissociation will not take place easily since the value of dissociation constant is what? Lower. The value is smaller. So one thing which we can conclude from here that the basicity of H2SO4 is 2. किस तरह का acid हुआ ये? It will be a dibasic acid. ठीक है. Next we will do the reaction of this सल्फ्यूरिक एसिड विद डिफरेंट बेसिस. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड जो डिफरेंट बेसिस के साथ जो है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जो वो किस तरह से रिएक्ट करता है या फिर मेटल्स के साथ जो वो किस तरह से रिएक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ H2SO4 with basis. Suppose I have sodium hydroxide and this sodium hydroxide is treated with H2SO4, then it will form NaHSO4 sodium hydrogen sulfate along with formation of sodium hydrogen sulfate along with formation of water. Another reaction, see it will form two types of salt. We have studied एसिड को जब बेस के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है. सी यही रिएक्शन अगर मैं दूसरे बेस से शो करूं H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्ट करें, इट विल फॉर्म Na2SO4 along with formation of water. So it can form two types of salt. दो तरह के सॉल्ट ये फॉर्म कर सकता है. यहाँ पे बाइसल्फेट भी बन रहा है और सल्फेट भी बन रहा है. ठीक है. सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैं KOH के साथ ट्रीट करूं, KOH के साथ सिमिलरली इसी तरह के कंपाउंड जो फॉर्म हो जाएंगे, it will form KHSO4 potassium hydrogen sulfate along with formation of water. And if KOH is further treated with H2SO4, another molecule, it will react with or it will form K2SO4 along with formation of water. So two types of salts are observed, bisulfate and sulfate. See, अगर ये बाइसल्फेट ही फिर से रिएक्ट कर रहा है तो जो है सल्फेट में चेंज हो जाएगा. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर शोन बाय सल्फ्यूरिक एसिड. तो दो तरह के कंपाउंड से फॉर्म कर सकता है, बाइसल्फेट भी फॉर्म कर सकता है एज वेल एज सल्फेट्स भी फॉर्म कर सकता है. देन अनदर रिएक्शन विच वी हैव स्टडीड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, रिएक्टिव मेटल्स विद एसिड. सो ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनका रिएक्शन किस तरह से होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. वी कैन ऑब्जर्व. Suppose here I have taken zinc metal. Zinc metal is treated with H2SO4 solution, dilute H2SO4. It will form zinc sulfate. Salt form हो रहा है zinc sulfate along with liberation of hydrogen gas. ठीक है. तो हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होती है when sulfuric acid is treated with the reactive metals. So suppose I have here magnesium metal. Magnesium metal is treated with H2SO4, dilute H2SO4.
it will form magnesium sulfate along with liberation of a hydrogen gas. ठीक है, so all these are the reactions of a sulfuric acid. Next we will study the reaction of sulfuric acid with salts. So here I have taken sodium carbonate Na2CO3. When it is treated with H2SO4, it will form corresponding sulfate, sodium sulfate, Na2SO4 along with the formation of water and carbon dioxide. And if here I am taking potassium nitrate KNO3, and when it is treated with H2SO4, अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 को ट्रीट कर रहे हैं, KHSO4 फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, साथ में नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है. अगर सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया H2SO4 को, देन इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड अदर सोल्ट जो फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ HCl. ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ sulfuric acid. With the reactions of sulfuric acid are how it can act as dehydrating agent. So different species हैं आपके पास, उनको ड्राई करने के लिए जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो वो यूज होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव केन शुगर, सो C12 H22O11 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, एंड it can act as dehydrating agent, so it will form 12C along with formation of 11 water molecules. Similarly, if you have other compounds also, for example if you have formic acid, it can also be dehydrated, or if you have oxalic acid, ऑक्सैलिक एसिड की भी क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा. एंड इफ यू हैव हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो उसको भी ये किस में चेंज कर देगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज कर देगा, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O. सो लेट अस कंप्लीट दिस रिएक्शंस. HCOH फॉर्मिक एसिड था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको चेंज कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड वाटर में. यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे, ओके, दो हाइड्रोजन थी. और अगर ऑक्सैलिक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें भी डिहाइड्रेशन कैरी आउट कर रहा है, CO प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट दिस or in all these reactions this concentrated sulfuric acid is acting as what, a dehydrating agent. So here we can write the property of sulfuric acid H2SO4 as dehydrating agent. Dehydrating agent. Dehydrating agent will remove moisture. It will remove water. ठीक है, क्या रिमूव करेगा, वाटर रिमूव करेगा. तो ऐसे स्पीशीज जो वाटर रिमूव कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे. ठीक है, सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो किस तरह से एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, सो हियर इज द रिएक्शन. H2SO4 it can change into H2O plus SO2 plus nascent oxygen. ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर फॉर्म कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन यहाँ पे आगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, 3 होगी, और एक जो वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये डिफरेंट स्पीशीज को क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल we have other species, suppose here we have HBr, and when this nascent oxygen will react with this HBr, two molecules of HBr, it will form water along with formation of Br2. तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस 2 HBr, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओवरऑल की इक्वेशन में देखो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ Br2. ठीक है,
तो इसी तरह से और भी डिफरेंट रिएक्शन जो हो सकते हैं इसके केस में। सो जैसे H2SO4 का रिएक्शन है कॉपर मेटल के साथ, तो पहला रिएक्शन तो सेम होगा, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 along with formation of water। So overall reaction आप यहाँ पे भी देख सकते हो, what is the overall reaction? So copper plus how many H2SO4? 2 H2SO4 and it will form copper sulfate along with the formation of sulfur dioxide and 2 molecules of water। ठीक है, so इसी तरह के और रिएक्शन जो है वो भी लिखे जा सकते हैं। रिएक्शन विद फास्फोरस, फास्फोरस के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। See, a reaction of H2SO4 with phosphorus so first reaction here I am writing H2SO4, it will form H2O plus SO2 plus nascent oxygen। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या आ गया, H2O plus SO2 plus nascent oxygen। देन सेकेंड रिएक्शन में अब P4 है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, P4O10। कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 10 ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने 10 ऑक्सीजन जो लिख दी। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 ऑक्सीजन जो वो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन दिस P4O10 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। P4O10 की आगे क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर कंडीशन शो कर दोगे, इट विल फॉर्म H3PO4। कितने मॉलिक्यूल्स, जितने फास्फोरस है उतने मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। अब वाटर मॉलिक्यूल्स देखो, 4 3 जा कितना हो गया, 12 मींस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिक्वायर्ड है। नाउ यू कैन राइट द ओवरऑल इक्वेशन। 10 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हो गई, कैंसल आउट। P4O10 प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। देन ओवरऑल इक्वेशन देखो, P4 प्लस how many H2SO4, 10 molecules of H2SO4 and it will form what, 4 molecules of H3PO4 along with formation of सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। अब वाटर का देखो, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, 6 कंज्यूम हो गए, कितने बच जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ sulfuric acid। In these reactions sulfuric acid can act as a what, an oxidizing agent। ठीक है, it can act as an oxidizing agent। So students, these are different oxo acids of phosphorus। This is sulfuric acid, already we have discussed sulfuric acid, preparation में इसकी पढ़ी हमने। H2SO4 है, sulfuric acid है, and this is peroxo monosulfuric acid। यहाँ पे ये peroxy linkage present है, that is why peroxo monosulfuric acid। and this is dithionic acid and this is peroxo disulfuric acid and you can see peroxy linkage is there, and this is disulfuric acid। another name of this compound is oleum, we have studied this compound also। ठीक है, so all these are the oxo acids, structures of oxo acids of sulfuric acid। clear? So students, next topic is halides of sulfur। so sulfur usually form halides with fluorine। और ये फ्लोरीन के साथ ही क्यों फॉर्म करता है हैलाइड्स, अगर हम बात करें कि हैलोजन तो क्लोरीन भी है। ठीक है, तो SF4 एग्जिस्ट कर जाता है, बट SF6 बट जो SCl4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर SF6 एग्जिस्ट कर जाता है, SCl6 जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज साइज ऑफ वाटर, क्लोरीन। ठीक है, सो फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, फ्लोरीन जो वो इजिली अकोमोडेट कर लेता है सल्फर, बट क्लोरीन का लार्जर साइज होने की वजह से इजिली अकोमोडेट नहीं कर पाता, तो SCl6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, SF6 एग्जिस्ट कर जाता है, या फिर SF4 एग्जिस्ट कर जाता है, SCl4 जब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम SF4 की बात करें, दिस इज
टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट सल्फर इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी बॉन्ड्स, फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? डेफिनेटली इट विल फॉर्म 4 bonds, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी seesaw shape. This type of geometry is known as seesaw shaped geometry, seesaw structure, and many times you will face a question that SF4 is hydrolyzed easily, while SF6 cannot. SF6 cannot be hydrolyzed. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है why SF6 can be easily hydrolyzed while SF6 cannot be easily hydrolyzed. So hydrolyzed means what? Addition of water. So here you can observe in the structure of, here you can easily observe in the structure of SF4, this is the vacant site. तो वाटर जो है वो इस साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है, इस साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है, एंड इट कैन रेडिली कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस। मींस कोऑर्डिनेटिंग साइट स्पेस इज अवेलेबल इन केस ऑफ व्हाट? SF4। अगर हम दूसरा जो मॉलिक्यूल है जैसे SF6 की अगर बात करें, SF6 के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की दैट इज ऑक्टाहेड्रल। So due to the presence of this structure, इस स्ट्रक्चर की वजह से वाटर को कोऑर्डिनेशन के लिए साइट जो है वो इजिली अवेलेबल नहीं है, तो जो SF6 मॉलिक्यूल है इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सल्फर जो है दैट विल बी sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। अगर यहाँ पे SF6 के केस में बात करें तो यहाँ पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड के केस में जो सल्फर है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है SF6 के केस में। व्हाइल इन केस ऑफ SF4 यू कैन ऑब्जर्व देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सल्फर। ठीक है, सो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस। ये तो मैंने इस तरह से लिखा, इस तरह ये क्वेश्चन जो है इसी एक और वे से जो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है व्हाई SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट। व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट व्हाइल SF4 इज नॉट। ठीक है, सो इसका रिएक्शन जब स्लो होता है, हाइड्रोलिसिस जब स्लो होती है या होगी ही नहीं इसके केस में, तो रीजन इसका ड्यू टू this octahedral structure. Water do not get any site for the coordination. सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और 6 के 6 बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रखे हैं, तो वाटर के साथ जो वो इजिली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। किसके केस में? SF6 के केस में। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वेकेंट साइट्स जो वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इजिली क्या कर सकता है? ये कोऑर्डिनेट कर सकता है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, सो